Assalamu alaikum. आज करो अस chemical equations and types अत करे मैं lecture ते upload की questions. When lead nitrate powder is heated strongly in a dry boiling tube, which of the following observations is correct? Actually यम examples यम chemical equations and types ना यम तिमनी हंस examples आसन यह थोड़ा theoretical question I know यह थोड़ा यह गस याद आसन मतलब यह फिजिक्स हंद क्वेश्चन पे कह समझ तरन सर समझ अत डेटा फॉर एग्जांपल यह एग्जांपल इक्वेशन हंस यह याद आसन इस लेड नाइट्रेट अत फार्मूला पी बी वैसे फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है PbNO3 2 टाइम्स लेड नाइट्रेट ये स्ट्रांगली हीट करहुन अत दिमो तचर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज करेक्ट अत क्या सपदन ये लेड नाइट्रेट पाउडर ये हीट करन तत बनन बनन अथ ये ऑप्शन नंबर बी तत बनन क्या बनन तत बनन ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ब्राउन फ्यूम्स यह बनन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उस गैस आर इवॉल्वड लीविंग बिहाइंड ए येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड बे पतकिन रोजन येलो कलर्ड रोजन लेड ऑक्साइड PbO ठीक गो अथ ऑप्शन नंबर 2 यह थ्योरेटिकल सवाल एग्जाम्पलों में हो सकता है ऐसा नहीं भी आए एग्जाम में बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. Question number 12. Consider the following chemical reaction: MnO2 plus HCl, MnCl2 plus H2O plus Cl. Identify the substances that are oxidized and that are reduced respectively. अब ये सवाल बहुत अच्छा है तिकाज अत मज छाड़न ये इक्वेशन दित अत मज छाड़न कत गमज रिडक्शन कत गमज ऑक्सीडेशन. दिस इज हाईली रेलिवेंट ठीक है. फॉर एग्जांपल इस MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड योर MnO2 यथ योर ऑक्सीजन जुड़ित योर MnCl2 यथ मज ऑक्सीजन येतस क्या तमुक मतलब गो MnO2 अत ऑक्सीजन रिमूव गुमुत रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तथ प्रोसेस वन रिडक्शन क्या वन रिडक्शन यथ पान रिडक्शन गि सह बेस करनावन ऑक्सीडाइज क्या सह करना बेस तथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मगर यहाँ पे फिलहाल हमें वो नहीं पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमें सिंपल पूछा गया है कुछ सबस्टेंस गो ऑक्सीडाइज कुछ सबस्टेंस गो रिड्यूस ठीक है. युस हमेशा वचन ऑक्सीडाइज कुछ गो रेड्यूस कुछ गो कम साइड रिएक्टेंट साइड हमेशा वचन ऑक्सीडाइज कुछ गो रेड्यूस कुछ गो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ रेड्यूसिंग एजेंट कुछ यह हमेशा वचन रिएक्शन की रिएक्टेंट साइड यम साइड ठीक है. अमुक मतलब गो वन पृछुन कत गई ऑक्सीडेशन कत गई रिडक्शन इस MnO2 यथ यम साइड ऑक्सीजन योर MnCl2 ऑक्सीजन द्रामुत अम मज नेबर ठीक है. तमुक मतलब गो यथ गमज MnO2 गमज रिडक्शन MnO2 गमज रिडक्शन एंड HCl ये HCl योर वचन ये Cl2 तमुक मतलब गो यम मज हाइड्रोजन द्रामुत नेबर तमुक मतलब गो ये हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तथ वन ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तमुक मतलब गो HCl गमज ऑक्सीडेशन तिकाज अम मज योर Cl2 यो तथ हाइड्रोजन क्या तमुक मतलब गो अम हाइड्रोजन द्रामुत नेबर गो अथ MnO2 गई ऑक्सीडेशन HCl गई रिडक्शन ठीक है. सॉरी MnO2 गई रिडक्शन तिकाज ऑक्सीजन गो रिमूव एंड HCl गई ऑक्सीडेशन तिकाज हाइड्रोजन गो रिमूव गो MnO2 इज कुछ ऑप्शन ये MnO2 इज reduced MnO2 is reduced and HCl is oxidized अथ ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब ये. इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्सोथर्मिक कस प्रोसेस यमो प्रोसेसो मज सॉरी एंडोथर्मिक लिखित एंडोथर्मिक गई सो प्रोसेस यथ योड़े पे हीट दिन यस हीट एब्जॉर्ब कर. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस CO2 ड्राई आइस क्या ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आइस सह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो नाव वन ड्राई आइस ठीक है. इवापरेशन ऑफ वाटर डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर यमो प्रोसेसो मज
यमो प्रोसेसो मज कौस अख एंडोथर्मिक अगर अस वो डायल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिडस एसिडस आब रलावन डायल्यूट कर एसिड सह हमेशा एक्जोथर्मिक तक ओडे नीर हीट गो सो एंडोथर्मिक क्या गोडनुक पार्ट एंडोथर्मिक क्या दोयम पार्ट क्या दोयम पार्ट सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ये सब्लिमेशन गई ड्राई आइसस यह बिल्कुल एंडोथर्मिक अत योड़े हीट पेवन दिन गो यही अत बिल्कुल ठीक इवापरेशन ऑफ वाटर ननी कथा यह एंडोथर्मिक अत योड़े पेवन हीट दिन अम पे वो डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ये अमोनियम क्लोराइड आबस मज रलावन इन वाटर यह एंडोथर्मिक अत प्रोसेस ये रलावन आबस मज अत योड़े पेवन हीट दिन गो अत 2 3 4 यम एंडोथर्मिक 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अम पे वो क्वेश्चन नंबर 14 क्या वन व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्सड टुगेदर ए वाइट पीपीटी फॉर्म्स इमीडिएटली विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डज दिस रिप्रेजेंट एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द प्रेसिपिटेट ये हसा एक्वस सोल्यूशन कमुक बेरियम क्लोराइडुक एंड सोडियम सल्फेटुक रलाओ पानवे ए वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट मे दपा यह पढ़नोमुत हथ मज लेक्चरस मज प्रेसिपिटेट गो तलकन इनसॉल्युबल सॉलिड हूँ जमा गह चाय मज तलकन रोजान तथ वन प्रेसिपिटेट फॉर्म्स इमीडिएटली ये रलावन सफेद पीपीटी बनान तलकन रोजान कंटेनरस मज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डज दिस रिप्रेजेंट एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द प्रेसिपिटेट यह कम किस्म केमिकल रिएक्शन अगर तो याद आए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन अकिस खास केमिकल रिएक्शन में जरूर बनन सो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये मे वन मज फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड अगर वो बेरियम क्लोराइड BaCl2 फार्मूला बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये रलावन अत बनान बनान यमुक पॉजिटिव डबल डिस्प्लेसमेंट यमुक पॉजिटिव रलान यम किस नेगेटिव बन अत बेरियम सल्फेट क्या बन BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस बनान क्या NaCl बन वाइट बेरियम सल्फेट यह वाइट इन कलर गो वाइट प्रेसिपिटेट यह बेरियम सल्फेट तमुक मतलब गो यही वोनमुत पृछमुत व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डज दिस रिप्रेजेंट एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द प्रेसिपिटेट यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अत ऑप्शन नंबर बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस पीपीटी अत मज सफेद पीपीटी वाइट पीपीटी बनान सह बेरियम सल्फेट अम पे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 लेंथी मैचिंग क्वेश्चन मैच द केमिकल रिएक्शंस इन कॉलम फर्स्ट विद देयर स्पेसिफिक कैटेगरी इन कॉलम सेकंड यम मैच करें यम टाइप्स ऑफ रिएक्शन करें तिमन पर्टिकुलर हमन सहित मैच वन रिएक्शन FeSO4 आयरन सल्फेट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यह रिएक्शन अगर वो यह कत गस मैच अत रिएक्शन खास कत योर अकई रिएक्टेंट प्रोडक्टन मज अक ज्यादा प्रोडक्टन मज फुटन तमुक मतलब गो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर वो डिकम्पोजिशन यहाँ पे एक ही ऑप्शन में डिकम्पोजिशन है एंड थर्मल डिकम्पोजिशन लिखा गया है गो यह थर्मल डिकम्पोजिशन तिकाज अत मज हीट एनर्जी अत मज यूज गसन तमी अत वन थर्मल डिकम्पोजिशन अत हीट लगन ये सॉरी गो ऑप्शन नंबर ASE ऑप्शन नंबर AC2 यम AS2 यथ बे यथ ओके अगर वो दोयम पार्ट क्या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट अत मज गसन अत मज हीट नेरन ओडे तमुक मतलब गो यह एक्जोथर्मिक ठीक बे अत मज चीज रलान बनावन चीज गो चीज कंबाइन करन बनावन चीज अत वन कॉम्बिनेशन एंड एक्जोथर्मिक अत ऑप्शन नंबर 3 बी पार्टस 3 ऑप्शन नंबर BSC 3 सह ये ऑप्शन मज गो ऑप्शन नंबर A वन वो यह आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर यस रिएक्शन अत मज योर आयरन योर कॉपर सल्फेट आयरन यह कॉपर कोर्मुत डिस्प्लेस पन्ने कंपाउंड मज डिस्प्लेस कोर्मुत बनोमुत आयरन सल्फेट प्लस बनोमुत कॉपर गो आयरन हटो कॉपर अमि सल्फेट कंपाउंड मज पान ब्यूठ सल्फेटस कॉपर चुन हटो अत रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक गो ऑप्शन नंबर CSE कम ऑप्शन नंबर CSE सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट यह क्या ऑप्शन नंबर CSE डिस्प्लेसमेंट
CSE tzoorim, CS chu tzoorim yath mans DSE agim. AgNO3 NaCl gives AgCl silver chloride plus sodium nitrate NaNO3. Ye chu double displacement reaction. Tikez yord yus silver os yord yus positive part chu so setin NO3 sۭtۍ. यमो कर डबल डिस्प्लेसमेंट यानी जज एक्सचेंज यमुक पॉजिटिव रलो यम किस नेगेटिव सो बनो AgCl सिल्वर क्लोराइड यमुक पॉजिटिव Na पॉजिटिव रलो NO3 नेगेटिव सो बनोन सोडियम नाइट्रेट क्या बनोन सोडियम नाइट्रेट यानी डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल ऑप्शन नंबर DSE ऑप्शन पार्ट नंबर DSE ऑप्शन 1 डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तथ मे प्रेसिपिटेट बनन गो अथ ए पार्ट सही जवाब metals and non-metals physical and chemical properties. Hydrogen gas is generally not evolved when a metal reacts with dilute nitric acid HNO3. This happens because HNO3 is a strong oxidizing agent. However, which pair of metals reacts with very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. Kam che ye gasan ze yus nitric acid chuna dilute nitric acid asan. Hydrogen yel metals karo reaction dilute nitric acid suit ta chuna hydrogen gas generally nearan kiya. Kya chun nearan tikez yus ta hydrogen gas near how. Ta chu karan nitric acid asan powerful oxidizing agent. Yus ta oxidize karan banavan chu ta water. Usually chuna it nearan kiya. Magar ach kiya exceptions ach exception magnesium to manganese सु हेकान ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करित. अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद थाउन सो अथ ऑप्शन नंबर C सही आंसर. इसके बाद है एन एलिमेंट X रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड X2O3. दिस ऑक्साइड dissolves in both hydrochloric acid and sodium hydroxide solution to form salt and water. Element X is likely to be अख एलिमेंट सह ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करन बनावन ऑक्साइड ये फार्मूला X2O3 यानी सो एलिमेंट O3 सो एलिमेंट तमिक ज एटम ऑक्सीजन 3. This oxide dissolves in both HCl and sodium hydroxide. ये तेन हिंट नुन ये ऑक्साइड यह दोशवनी मज डिजॉल्व गसन अख हाइड्रोक्लोरिक एसिडस मज बे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशनस मज अख HCl एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यानी युस ये ऑक्साइड बनो यह एसिडस सत रलन बेस सत रलन यानी रिएक्शन करन तमुक मतलब गो अत गस आसुन डेफिनेटली दोशवे बिहेवियर एसिडिक त ताकि बेसस सत रिएक्शन कर बेसिक बिहेवियर त ताकि युस एसिडस सत रिएक्शन कर यूथ बिहेवियर तमन ऑक्साइडन तमन वन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तिम एसिडन सत रिएक्ट बेसन सत रिएक्ट ठीक गो यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड डेफिनेटली वन अगर फार्मूला पे गो X2O3 फार्मूला यह बनन यस बोरान फैमिली तमची बोरान एलुमिनियम गैलियम यस सो बोरान फैमिली तमिक एलिमेंट तिमन ऑफ दिस पैटर्न कत ऑक्साइडस फार्मूला गो अत आंसर Al2 यमो ऑप्शनों मज अगर वो बोरान फैमिली हूँ अकै एलुमिनियम बे एलुमिनियम कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक गो अथ Al2O3 एलुमिनियम ऑक्साइड गो अथ ऑक्साइड ये एलिमेंट कुछ तेल यह एलुमिनियम. And but ब्याक सवाल which of the following statements is incorrect regarding the chemical properties of metals and non-metals. यमो मज वन दिथ एग्जांपल कुछ गलत वुचन कत रिगार्डिंग मेटलन तो नॉन मेटलन हज प्रॉपर्टियन रिगार्डिंग गोडनुक नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर यह बिल्कुल सही यह ठीक अस इनकरेक्ट छाड़न यम नॉन मेटलिक ऑक्साइड तिम आम तौर पर या तो एसिडिक ना न्यूट्रल फॉर एग्जांपल CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड मगर एसिडिक तिकेज सह आबस सत रलित कार्बोनिक एसिड बनान. न्यूट्रल फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड CO सह न्यूट्रल इन नेचर गो नॉन मेटलन हंद ऑक्साइड जनरली आसन एसिडिक या न्यूट्रल यम मेटलन हंद ऑक्साइड तिम जनरली बेसिक या आसन एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक क्या गो एम्फोटेरिक गो युस एसिडन सत रल बेसन सत रल दोशवनी सत कर रिएक्शन सो बोथ नेचर्स हावन. कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस विच इंस्टेंटली कैचेस फायर. ये ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है क्योंकि जो सोडियम तो मेटल पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स
ہٕنٛدرِ سبس سۭتۍ تہِ رلان ویری وایلنٹلی پتہٕ چھِ یِم ہائیڈروجن گیس اِوالو کران یتھ پتہٕ نار چھُ لگان. ایکوا ریگیا از اے فرٛیشلی پریپیٲرڈ مکسچر آف کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ اینڈ کنسنٹریٹڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl in the ratio of 3:1. یُس ایکوا ریگیا چھُ آسان یہِ چھُ آسان سولوٗشن مکسچر آف کمیُک مکسچر چھُ یہِ آسان. ایکوا ریگیا چھُ مکسچر آف آسان نائٹرک ایسڈ تہٕ ہائیڈروکلورک ایسڈُک. اتھ منٛز چھِ آسان 3 پارٹس کمِکۍ 3 پارٹس چھِ آسان ییٚمِکۍ ہائیڈروکلورک ایسڈٕکۍ تہٕ اکھ پارٹ چھُ آسان نائٹرک ایسڈٕکۍ. مگر اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھو کوسچنس منٛز چھُ أمۍ ریشو دیُتمُت 3:1 ریشو مطلب ریسپیکٹِولی گۄڈٕ چھُنہٕ HNO3 دیُتمُت پتہٕ HCl. یہِ چھُ وَنان امہِ حساب 3 چھِ نائٹرک ایسڈٕکۍ تہٕ HCl چھِ اکھ پارٹ جو کہ بالکل غلط ہے. ایکوا ریگیا یہ نہیں ہوتا ہے. ایکوا ریگیا کیاہ چھُ آسان تتھ منٛز چھُ آسان نائٹرک ایسڈُکٕے اکھ پارٹ ہائیڈروکلورک ایسڈٕکۍ چھِ آسان 3 پارٹ. یاد کِتھ کٲٹھۍ چھُ تھاوُن 3 پارٹ چھِ آسان HCl مےٚ اوس تھومُت یِتھ کٲٹھۍ یاد HCl یتھ منٛز چھِ 3 ہُم یِوان یتھ منٛز چھِ یِوان 3 اکھ چھُ یِوان H بیٚیہِ چھُ یِوان C بیٚیہِ چھُ یِوان L یتھ منٛز 3 چھِ یِوان تمیِکۍ چھِ 3 پارٹ. یُس پتہٕ نائٹرک ایسڈ بچو تمیُک چھُ اکھ پارٹ 1:3 HNO3 HCl. ٹھیک چھا. इसके बाद ہاں یہ آپشن غلط ہے اسہِ اوس غلطٕے چُنُن آپشن نمبر C چھُ غلط گوٚو جواب یی اتھ یِہوے. اگر أسۍ آپشن نمبر 4 کیاہ چھُ وَنان iron does not burn on heating but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. یہ بالکل صحیح ہے. iron does not burn on heating. ironس اگر ہیٹ کرو یہِ چھُنہٕ burn کران کینٛہہ مگر یِم iron fillings اگر تِم فلیم پٮ۪ٹھ برنرچہِ فلیم پٮ۪ٹھ ہیٹ کرہوکھ تیٚلہِ چھِ تِم burn کران. Anyways, question number 19. Which among the following non-metals is lustrous and which non-metal is an electrical conductor? Usually ییٚلہِ أسۍ میٹلن تہٕ نان میٹلن ہٕنٛز پراپرٹیٖز چھِ پران أسۍ کیاہ چھِ پران أسۍ چھِ پران metals are lustrous and non-metals are good conductors of electricity. Non-metals are dull in color and non-metals are bad conductors of electricity. یہِ چھُ ایکسپشن پٮ۪ٹھ آمُت سوال چھُ آمُت کُس نان میٹل چھُ lustrous آسان نان میٹل ٲسِتھ چھِ تتھ چمک آسان پٮ۪ٹھٕ. اینڈ which non-metal is an electrical conductor? Usually چھِنہٕ نان میٹل کنڈکٹ کران electricity کینٛہہ لیکن یہِ چھُ اسہِ ایکسپشن پٮ۪ٹھ آمُت سوال کُس نان میٹل چھُ یُس electrical conductor چھُ اصل آسان ییٚمِس پاور چھُ اصل پٲٹھۍ پکان. یہِ چھُ یاد تھاونٕچ اوبویسلی یہِ چھُ ایکسپشن تہٕ یہِ چھُ آسان آیوڈیٖن چھُ سُہ نان میٹل یُس نان میٹل ٲسِتھ چھُ مگر لشٹرس چھُ نان میٹل ٲسِتھ چھُ تتھ چمک آسان گوٚو اتھ یی آیوڈیٖن یتھ گۄڈنِکِس پارٹس. دویمِس یی کُس نان میٹل چھُ آسان electrical conductor اتھ یی کاربنُک گریفایٹ ایلوٹروپ گریفایٹ یُس پینسلس منٛز چھُنہ مٔنٛزۍ آسان سُہ چھُ تمے چھُ یہِ کرنٹ گژھان ٹرانسفر تمی گژھِ نہٕ پٕلگس منٛز پینسل لاگُن کینٛہہ پتہٕ یپٲرۍ اتھس سۭتۍ تھاوُن کینٛہہ تِکیازِ گریفایٹ یُس آسان چھُ سُہ چھُ آسان گُڈ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ڈیوٗ ٹُو د پریزنس آف فرٛی الیکٹران چھِ تتھ منٛز آسان تتھ چھُ لیٲڈ سٹرکچر آسان تمی چھُ تمہِ وِزِ پاور پکان. گوٚو اتھ یی آیوڈیٖن از لشٹرس. ڈایمنڈ نہ ڈایمنڈ چھُ آسان بیڈ کنڈکٹر ڈایمنڈ چھُنہٕ electrical conductivity ہاوان کینٛہہ. Iodine is lustrous and graphite is an electrical conductor. Yes, اتھ یی option number B correct. Iodine چھُ lustrous آسان and graphite چھُ سُہ non metal یتھ electrical conductivity چھِ اصل آسان. Graphite چھُ کاربن آسان مگر امہِ چھِ allotropic form. Question number 12 کتھ کرو یہِ چھُ again match alloy with its exact metallic composition. Again یہِ چھُ theoretical question یہِ چھُ یاد گژھِ آسُن یُس براس چھُ سُہ چھُ آسان alloy کمیُک کاپرُک تہٕ زنکُک کاپر اینڈ زنک CuNZn امیُک چھُ آسان براس گوٚو A یی option number 3 یا چھُ یتھ منٛز یا چھُ یتھ منٛز. برونزٕچ اگر کتھ کرو برونز چھُ آسان کاپر اینڈ ٹِن یِمن منٛز چھُ اکثر کنفیوجن گژھان یُس براس چھُ آسان سُہ چھُ آسان کاپر تہٕ زنک کاپر زنکہٕ چھُ آسان براس یُس برونز چھُ آسان سُہ چھُ آسان کاپر تہٕ ٹِن برونز چھُ آسان کاپر تہٕ ٹِن. گوٚو B پارٹس یی option number 1 B سو option number A ہی چھُ correct answer یِہوے یتھ. وۄنۍ وٕچھو سولڈر کیاہ چھُ آسان سولڈر چھُ آسان لیڈ تہٕ بیٚیہِ ٹِن لیڈ اینڈ ٹِن چھُ آسان سولڈر. اگر ایملگمٕچ کتھ کرو ایملگم کیاہ چھُ آسان
ایملگم چھُ آسان ایملگم ییٚتٮ۪ن تہِ آسہِ تَتھ منٛز چھُ اکھ کمپوننٹ ضروٗری مرکٔری آسان یُس لِکوِڈ میٹل چھُ آسان مرکٔری ییٚتہِ ایملگم ییٚتٮ۪س تہِ آو تَتھ منٛز چھُ ڈیفنِٹلی اکھ کمپوننٹ مرکٔری گوٚو اَتھ یی Hg مرکٔری پلس انَدر میٹل پلس any other میٹل گوٚو اَتھ یی اوپشن نمبر اے بِلکُل باقٕے اوپشن تہِ گژھن آلریڈی میچ باے اینڈ سبسکرایب